So, welcome back. Hope audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. See, basically, uh, this is a pie chart. This is a failure attribute. Shows how the host assembly fails. Means with what reasons? Here I have mentioned two things. Just mark two things. One is a improper host assembly, and a second one is host fitting mismatch. So improper host assembly means it happens only at the assembler end. Bad crimping, bad cutting, all those factors. Then the next one, that 19% host fitting mismatch. That is almost it happened because of what we asked, sky, non-sky, using the sky ferrules as a non-sky ferrule and all those things. The host fitting mismatch that consists of 19%. Now, what we should know is, see, this is you know factors influenced by a hose life. See, the third one, I just marked again two things on here. कि एक है compatibility of hose with end fittings, Skype, non-Skype, non-Skype की जगह पे Skype वाला लगा देना, और मतलब जो स्पाइरल होस है उसको ब्रेडेड वाला लगा देना, जो भी कंपैटिबिलिटी ऑफ होस विद एंड फिटिंग्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ असेंबली फैब्रिकेशन मेथड्स एंड स्किल्स, जो जो हमने जो पहले दिखाए थे. तो ये एक चीज आपको इजी समझना चाहिए, स्काइप सॉकेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, नॉन स्काइप सॉकेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सी, स्काइप सॉकेट को आइडेंटिफाई करना, उसका टीथ ऐसे रहेगा. इफ यू कैन फील इट व्हेन यू जस्ट फील इट विथ योर फिंगर. इफ अगर आपके पास कोई सॉकेट है तो आप उसको एक अपना उंगली से उसको फील कर सकते हैं, उसका फिर उसका ग्रोइंग. ये देखिए, स्काइप होगा तो ऐसे रहेगा, नॉन स्काइप होगा तो ऐसे रहेगा. ठीक है. और ये ब्रेडेड का ये ऐसा रहेगा, स्पाइरल का थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में ग्रू रहेगा. अभी मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को एक दूसरा चीज दिखाना चाहता हूँ. क्या बोले? एनीथिंग टू मी? ध्यान से देखिए, एक होस बस्ट हुआ है. बस्ट होने के बाद वो आम कितना जल्दी वो नीचे आते हैं, मीन सडनली इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. सो द ऑपरेटर कैन नॉट कंट्रोल इट आउट. सी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है. आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको. बाल बाल बच गया है. मैं उसको वापस एक बार दिखाना चाहूंगा आपको. सी, जो अभी हमने देखा उसको थोड़ा सा एक एनिमेटेड नहीं है, इसको एक मॉडल स्ट्रक्चरिंग में हम एक बार दिखा देंगे.
अगर एखादा आदमी अगर बगल में खड़ा रहेगा तो व्हाट कैन हैपन? Anup sir, can you just tell me at what pressure this is happening? Just to This happens from about 150 bar to about 350 bar. About 50 bar to 350 bar. I'm just showing you some more detail. See, yeah, Anup, can you repeat the video again, please? which video you need to see? Just last video where the model is there. Where Both the video, even crane also. this one? Yeah. Okay. You want to see this one? Sachin? 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 maybe there is a connection issue, I guess that's why. Yeah, this video, right. Okay. And even next video also. This also. See, a pinhole or now you can just you can imagine this size of pressure. A pinhole size leak in a hose can expel fluid at near a bullet speed of more than 180 meter per second. So this is the amount of pressure which is generating. तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका क्या impact हो सकता है. तो अपने लोग अपना जो पहले जो मैंने बताया कि KYB know your business. So this is very important. What you are supplying and to whom you are supplying. Okay, this is what I just wanted to share you. Now we will go back to our fittings again. Let me take another 1 minute. Anup, I have one small question. Mhm. हम लोग sometimes R1 पाइप को विदाउट स्कीविंग के बिना स्कीविंग फिटिंग लगा के हम क्रीम करते हैं, तो उससे कुछ ऐसा गलत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? गलत है. गलत है. अच्छा, ये ओडी का नहीं है, ओके. है Now we'll go. There is a module called OTT, that is 1, 2, 3. In how we can identify the fitting, identify the fitting in 3 steps. Okay, is the screen visible? Yes, Yes, sir. It's visible. Yes, yes. See,
Now, first of all, what you need to do is classify the seat type and angle. Classify the seat type and angle means what? So for that, you need to have a seat angle gauge. Seat angle gauge determines, because there are about 4 different angles comes in, that is 12 degree, 30 degree, 37 degree and 45 degree, which are the common angles in a seat angle gauge. So how to check? This is the method to check those angles. See, this should be perpendicular, not deviated from the angle. So this is a way to check the seat angle. For a female fitting, this is a way to check the seat angle. If any doubt comes in, please. Okay. So if the seat angle is 12 degree, that is 45 degree inclusive, your coupling falls in the category of metric, that is DIN 24. You need to first you need to classify the fittings. So if it falls in 12 degree, then your fitting belongs to a metric category. Okay. If the angle falls in 30 degree, then it falls to BSP or your JIS category. Okay. If the angle falls into 37 degree, then be assured your fitting falls into JIC category. If the fitting falls in 45 degree category, again it is a SAE 45 degree. So the difference is 37 and 45. And if it is flat, that you can from the naked eyes itself you can come to know means what exactly the seat is, if it is flat or not. So if it is flat, it is either it is ORFS or it is a Chinese metric. So if it is a tapered one, it can be either BSPT or NPTF or Japanese tapered. So again, you can classify it into that. Then comes the fitting standard. Now, the second is now you have classified the fittings. Now you need to measure the thread diameter and pitch. Okay, how to measure it? Measure it in the OD, like this. Either measure the OD or measure the ID of the nut. So, and again, what the instrument you need is a pitch gauge. That was a seat angle gauge, and this is a pitch gauge. Now, how to measure the pitch? This is a way to correctly to measure the pitch. Now, confirm the size. The third is confirm the size. For example, say in flanges, there is no degree, there is no seat angle, there is no pitch and everything. The simple method to identify is measure the OD and measure the thickness. Okay. Now, if the flange OD, for example, if the OD is 31.75, thickness is 7.75, it is half inch, 6000 psi. Same like that, if it is a 44.45, thickness is 8, it is a 1 inch, 3000 psi. Like that, you have the chart up to 3 inch. You can identify it. Any doubt on this, friends? सर एक डाउट था, एक्चुअली जो आप बोल रहे थे मिसमैच नहीं होना चाहिए फिटिंग, बट जो अभी तक का फिटिंग मतलब मेरे पास R1 आर्टिकल आ रहा है, उसमें खाली निपल नट वही रहता है, खाली कैप खाली नॉन स्काई के लिए अलग आता है, खाली कैप, बट उसका जो थ्रेड क्या बोलते हैं जो अंदर का पोर्शन है कैप का वो डिफरेंट है एज कम्पेरेटिवली R1 कैप. सो इज इट राइट और रॉन्ग?
नहीं नहीं, वापस फिर से बताइए, मुझे मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अ, अभी अभी क्या हो रहा है, जो मैं फिटिंग मंगा रहा हूँ R1 R2 के लिए, ठीक है। तो उसमें जो मुझे सामने वाला जो फिटिंग दे रहा है R2 के लिए, तो नॉन स्काई के लिए, ठीक है, जो कैप आ रहा है वो, तो स्काई R1 में डायरेक्टली बोल रहे हैं वो क्रीम कर दो R1 के लिए, R1। गलत अच्छा। गलत है वो, गलत है वो। ओके। ओके। तो बट R1 हमने के लिए अलग। इसमें बहुत सारे टेस्ट किए, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। नहीं नहीं, टेस्टिंग में फेल नहीं हुआ उसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो कंपेटेबल है। ओके। ओके। टेस्टिंग सो मीन्स व्हाट? तो टेस्टिंग मीन्स केवल प्रेशर टेस्ट करने से उसका लाइफ और वो सब कुछ कंफर्म नहीं होता ना। देखिए, वो जो पर्टिकुलरली वो फिटिंग भी आप यूज कर सकते हैं, R1 भी स्काइप कर दो ना। स्काई फिटिंग स्काई में यूज करो आप उसको ही। आगे का बैक बोर बढ़ा दो, बैक बोर बढ़ा के उसको R1 को भी स्काइप करके वो फिटिंग यूज कर लो, उसका क्रिम डाटा देख लो। सी, ऑल यू नीड इज ए क्रिम डाटा। सर क्रीम डेटा तो दिया है उन्होंने, बट वो हाँ, बोल रहे थे कि विदाउट स्काइप का, क्योंकि ऑलरेडी कैप और जो पाइप में है उसमें गैप दिया है उन्होंने, तो नहीं, करना इसमें ही नहीं इसमें चाहिए। now I'll let me go back to a क्योंकि समटाइम्स हमने देखा है कि कैप इजीली R1 पाइप में बैठ जाता है, तो उसको स्कैनिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा लगता है कैप। तो डायरेक्टली फिट होता है, क्रिम करते हैं, देते हैं, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। स्क्रीन दिख रहा है ये स्काइविंग वाला? प्रहलाद, दिख रहा है सर। दिख रहा है? अच्छा, अब ये देखो, स्काइविंग करेंगे तो उसका स्काइविंग का मतलब ये जो गैप है ना, ये पर्टिकुलर, ये देखो, ये मेरा माउस दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है सर। ये पर्टिकुलरली यहाँ से ये जो जितना गैप है इसमें क्या अकोमोडेट हो सकता है? इसमें केवल वायर अकोमोडेट हो सकता है। ओके। अभी क्रिम्पिंग का मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलरली ये जो है ये वायर के आसपास, वायर वायर में आना चाहिए, और ये जो गैप है इसमें जो बाकी का मटेरियल अकोमोडेट होना चाहिए। ओके। अभी आप समझ लो R1 के अंदर अगर बिना छीले अगर डाला तो वो पर्टिकुलरली वो मटेरियल कहाँ जाएगा? इधर बैठने के लिए जगह रहेगा है रब क्या उसका? नहीं नहीं, उसमें तो रबर ही जाएगा पूरा। हाँ, तो वायर में बैठ होगा है क्या? नहीं हो। नहीं होगा, नहीं होगा। वही, यू हैव द आंसर विथ यू नाउ। और सर और एक ये बात थी देखो, जो। लेट मी कंप्लीट। अब ये देखो, ये नॉन स्काई वाला है। ये हाँ। नॉन स्काई वाले में इतना ज्यादा गैप क्यों दिया है? क्योंकि ये वायर में ये टीथ वायर तक आ जावे और बाकी का जो मटेरियल है वो यहाँ तक चले जाए, ये पूरा यहाँ पे वो अकोमोडेट हो सकता है। ओके। समझे ना? हाँ सर। तो जो बट, दैट, हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो निप्पल का जो उसके अंदर जो ग्रू दिए है निप्पल के ऊपर, तो हाँ, उससे फर्क पड़ेगा क्या नॉन नहीं स्काई नहीं, और उससे स्काई कोई में? फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं ओके। पड़ता है, उससे कोई ओके। फर्क नहीं ओके। पड़ता है। ओके। ओके सर। ओके। मतलब खाली हम कैप इतना चेंज करते हैं ऐसे टाइम पे। हाँ, निप्पल। मतलब देखो, कैप आपको उस हिसाब से कैप लेना होगा, बाकी कुछ नहीं। ओके। मैं आपको दूसरा, मेरे पास मैं एक वीडियो डायमेंशन वाला देख रहा हूँ, अगर वो मिल गया तो मैं आपको बता दूं।
ये देखिए, ये स्काईविंग वाला सॉकेट का ग्रू ऐसे रहेगा, नॉन स्केप की ग्रू ऐसे रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर इतना गैप क्यों दिया उन्होंने? ये गैप इसके लिए कि पूरा वायर उसके अंदर अकोमोडेट कर पाए। वायर और उसके ऊपर के जितनी भी रबर है ना, वो पूरा पार्टिकल इसके अंदर क्रिम्पिंग के बाद यहाँ पे अकोमोडेट है, और ये जो टीथ है वो डायरेक्ट वायर में बैठ करे, जो कि ये वाला सॉकेट में पॉसिबल नहीं है। ये वाला इसमें केवल वो वायर टच हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता। फर्क समझ में आया है क्या? जी। यस सर, यस सर। तो इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेल अगर उसमें कैप का ओडी अगर ज्यादा है और जो स्कैनिंग करने के बाद थोड़ा सा बड़ा लगेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्रिम्पिंग करने के बाद? नहीं, ओडी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्रिम्पिंग क्या है, वो पर्टिकुलरली आपको उस हिसाब से डायमेंशन वाला सॉकेट लेना होगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब आप डाइस की बात कर रहे हैं, और जो मेंशन किया उन्होंने जितना डेप्थ प्रेस करना है उसको सेट करके नहीं, irrespective क्रिम्पिंग ऑफ देखो सचिन, हाँ crimping is an engineering, and you need to set your parameters very wisely and technically. वो कोई कुछ बोलता है वो ये हो जाएगा तो नहीं होता है। you need to do it very correctly, very technically। उसमें टेक्निकल मतलब जो अपने लोग देखो वाई एनालिसिस करते हैं ना, वैसे इसके ऊपर सोचना होगा आपको 4 बार 5 बार, ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों नहीं ऐसा, क्यों नहीं। ये जब 4 बार सोचेंगे देन यू विल गेट द आंसर। अच्छा। अगर किसी ने बोला उसमें चल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। you need a justification for that every point। इस साइड में कुछ तो फिट होता है ना, कुछ तो फिट नहीं नॉर्मल अभी कैसा हुआ है, जो प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर ने दे हैव गिवन ऑन चार्ट, तो उसने बताया कि ये आईडी होस्ट के लिए, ये होस्ट के लिए इतना प्रेस करना है, उसमें इतना डेप्थ होना चाहिए, इसको इतना सेट करना है, उसको आपको प्रेस करना है। लेकिन तो उन्होंने सॉकेट अकॉर्डिंगली का हम ग्रू का प्रेस कर रहे डायमेंशन हैं दिया है क्या? या तो वो हिसाब से जो सॉकेट सॉकेट का जो सब वो जो पर्टिकुलरली जो सॉकेट जो क्रिम कर रहा है उसका ग्रू का आईडी दिया है क्या? कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं वो कुछ दिया नहीं उसने, वही इम्पोर्टेंट है उन्होंने ना। अगर वो ज्यादा पर्टिकुलरली स्कैनिंग नॉन नहीं, स्कैनिंग की कुछ बात ही नहीं किया उन्होंने। if you don't have that data then how you can assume कि इतना है, इतना है। ओके। ऐसा कोई मशीन मैन्युफैक्चरर ऐसा कोई डाटा नहीं दे सकता है। अगर कोई दे रहा तो गलत दे रहा है। ओके। Crim data is given by the fitting manufacturer for their fittings, अच्छा। and all fitting should be validated perfectly to the hose brand and hose type। अभी मैं Okay. एक एग्जांपल बताता हूँ। there is a hose in पार्कर में R2 में 301 नंबर का एक पार्ट नंबर आता है। सेम वैसे पार्कर मार्कवेल करके भी उनके पास एक ब्रांड है। ये दोनों में फिटिंग का क्रिम डायमीटर अलग अलग है, दोनों भी R2 है, लेकिन दोनों का क्रिम डायमीटर अलग अलग है, क्योंकि 301 में जो वायर है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है और पार्कर मार्कवेल के वायर अलग है। इसके लिए उसका दोनों का क्रिम डाटा ही अलग है। चलता है अगर वो 301 को जैसे क्रिम कर रहा है वैसे पार्कर मार्कवेल भी किया, चलेगा, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब्जेक्ट आता है ड्यूरेबिलिटी, और किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी चलो इतना नहीं है, लेकिन मैं कंसिक्वेंसेस जब सोचता हूं तो आई कैन नॉट गिव दैट सेम थिंग। तो इसके लिए वापस ये एक बार ध्यान रख लेना, KYB, नो योर बिजनेस, कि किसको दे रहा है।
ओके ठीक है। तो ये फ्लैंज का दिख रहा है वापस स्क्रीन में, अभी फ्लैंज ही दिख रहा है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फ्लैंज की ये फ्लैंज की ओडी, ये फ्लैंज की ओडी और थिकनेस से उसका डायमेंशंस पता चलता है। ये फ्लैंज की ओडी है और ये थिकनेस है। अगर ये दो फाइंड आउट हुआ तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं ये फ्लैंज की साइज है। नॉर्मली ये सारे 3000 पीएसए 6000 पीएसए सारे काम आता है। तो जैसे अभी जैसे 63.50 ओडी है, 12.57 की थिकनेस है, तो इट इज है 1.5 इंच 6000 पीएसए फ्लैंज। सर ये जो बोल्ट साइज और बोल्ट साइज मेट्रिक है बोल्ट वो क्या है? साइजेस मैंने रेगुलर जो उसको, ये देखिए ये फ्लैंज टाइट करने के लिए ऐसे स्प्लिट यूज करता है। हो थांबा, हाँ कुणाला मारतोय? ये ऐसे स्प्लिट यूज कर रहा है। तो ये स्प्लिट में जो बोल्ट यूज कर रहा है वो बोल्ट के ओके साइजेस दिया है ये। अच्छा। और जो लास्ट में है टॉर्क वैल्यू? ये बोल्ट टाइट करने की वैल्यू है। ओके ओके। Anup sir, I have हाँ one question. हाँ बोलिए ना। The flange thickness, हम्म there is a tolerance level in that also. If it exceeds that, what can be done? थिकनेस एक्सीड हुआ तो थिकनेस अगर ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। ये जो पर्टिकुलर पीस है, ये पीस हाफ, Mm-hmm. ये बेंड हो जाएगा। Mm-hmm. या ये बेंड हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा। While tightening it. हाँ, वाइल टाइटनिंग वो टॉर्क अगर उसके साथ में, क्योंकि अगर ज्यादा थिकनेस है तो ऑपरेटर को शायद वो ऑपरेटर को थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखेगा, वो ओवर टॉर्किंग करने शुरू करेगा। ओवर टॉर्किंग किया तो यहाँ से टूट जाएगा ये। Okay. ये पर्टिकुलर पोर्शन या अगर मोनो है तो यहाँ से टूट जाएगा। Okay. तो दिस इज फ्लैंक्स का ये पूरा आपको बोल्ट साइज भी बताया गया है, बोल्ट और उसका टॉर्क वैल्यू भी है। ठीक है। उसके बाद इसके ओरिंग साइजेस, इसके क्या ओरिंग की आईडी चाहिए और क्या क्रॉस सेक्शन चाहिए वो ये यहाँ दिया है। irrespective of the sizes, all o-rings will have a cross section of 3.53 millimeter। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये 3.53 हर साइज में रहेगा। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अभी आप एक चीज देख लीजिए, इसमें 3000 पीएसए और 6000 पीएसए दोनों को एक ही ओरिंग लगता है। देखिए 34 3000 6000 ओरिंग एक ही आएगा, एक इंच 3000 6000 ओरिंग एक ही आएगा। देखो 1.5 इंच का 3000 6000 ओरिंग एक ही आएगा। तो दिस इज ओरिंग साइजेस। अब मेट्रिक, अगर Anup sir, 12 can you की go? Anup sir, sorry to cut. Can you go previous slide? ये 8000 के लिए कौन सा flanges use हो सकते हैं? कैटरपिलर। Caterpillar flanges. हाँ, इसमें नॉर्मली डी डी टाइप की ओरिंग लगता है, हाँ. डी टाइप की रिंग लगता है। लेकिन ये डी टाइप की रिंग की अवेलेबिलिटी कम है, इसके लिए ये पर्टिकुलर ओरिंग यूज कर सकता है। Okay. क्योंकि क्या है, डी डी रिंग इज अगर डी रिंग बता दिया ना तो इस लोगों को पता है ये कैटरपिलर के लिए, कैटरपिलर का नाम लिया तो कीमत डायरेक्ट एकदम 2 गुना 3 गुना हो जाता है।
And that is true. That is true. If it is Caterpillar, it gets increased by 4 to 5 times. हाँ, so normally क्या है, लोग replacement market में normally people use only the normal O-rings, not D-rings. But will it be compatible? Yeah, it is Because compatible because the grooves are same. the grooves are same. Yeah, groove is same, the O-ring grooves are same, all things are same, but उसमें कोई issue नहीं है. Okay, sir. So if the fitting is of 12 degree, 12, if it classify into a 12-degree seat angle, it is a metric thread. Metric thread में see you need to measure, अगर एक बार वो 12 degree है, then you need to measure the tube body. Tube body एक बार see this is a standard tube body कहाँ है? Tube body अगर ये select कर दिया, अभी 10 मिलीमीटर का tube body है और उसका नट साइज आ गया, उसका थ्रेड का ओडी 16 मिलीमीटर या नट का आईडी 14.5 है, so it is a M16 into 1.5, metric size है 10L. If it is a 12 millimeter and if the thread size is M18 into 1.5, it is a 12L. Same time, if it is a 12S, sorry, if it is a 15, it is a 22, the thread size will be M22 into 1.5 and it is a 15L. Like that, you can get all the dimensions. This I will be sharing, this particular sheet I'll be sharing with all of you. Again, the O-ring sizes for that. These are the O-ring sizes. Now, for L series, for example, if it is a 10L, the O-ring required is 7.5 millimeter by 1.5 millimeter cross section. लेकिन 10S के लिए सेम O-ring नहीं रहेगा. हाँ, यहाँ पे तो सेम है. 10S के लिए 7.5 and 1.5. See, but here you need to know is the thread size, difference between the thread size, M16 and M18. For a 25S or 30S, for a 30S, the O-ring is 25.3 millimeter by 2.4 millimeter. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन को O-ring नहीं मिलता है, जैसे 2.4 मिलीमीटर, तो लोग क्या करते हैं, चलो जाने दो, एक 3 mm को O-ring डाल देते हैं. 3 mm को O-ring डाल दिया तो वो पर्टिकुलरली, ये देखिए, ये अगर 3 mm को O-ring डाल दिया तो ये आगे ये पूरा टाइट नहीं होगा, समझे ना? So you need to, all you need to do is you need to buy the correct size of O-rings. Don't compromise on O-rings. It's a crucial component. It may not be that costly, but don't stick to the available things. You buy what you need. Okay. Now, if it is a BSP, it is a 60-degree cone, 30-degree one side and a 60-degree. Then you need to measure the size. If it is a 16.66 OD thread and a 19 TPI, it is a 3/8 BSP. Like that, if it is a 21 millimeter OD, 18.9 millimeter ID, 14 TPI, it is a ½ inch. So first of all, you need to segregate the fitting by seat angle. Once you segregate it, it is easy to find out. So that is why we are given it in 3 steps. Identify the seat angle, then measure the thread and confirm the thread. So this is a O-ring for BSP. If it is O-ring with a O-ring groove.
This is for Japanese connection. Japanese also it comes under BS. It's also BSP threaded, but with a reverse spur. So you have a chart for that. Now for UNF, the same thing. Now the critical things comes in here, ORFS. See, there are chances that you get misguided with the dimensions. See here, just see 17.46 and 18. This is 16 and it's a 1.5 pitch. So it matches somehow. But if you make some mistake, it can be a 11-16 ORFS connection, but you will be misdirected to a M18 into 1.53. So while measuring, while identifying ORFS and a metric flat sheet, you have to be very careful. Very careful means extra cautious. Any doubt on this? Sir, can you just repeat again on this thing, the metric flat seating and ORFS? See, I'm just giving you an example. If the thread OD is 17.46, okay, and approximately जिसने calculate वो वर्नियर पकड़ा उसने बोल दिया, उसने गलती से बोल दिया 18 है, और वो पिच एंगल चेक करते समय वो 16 टिपे के बदले वो 1.5 पिच में चला जाएगा, 1.5 पिच का गेज लेके चेक करेगा, तो डायरेक्ट वो 11-16 के बदले M18 into 1.5 में चला जाएगा वो. मेरा कहने का मतलब है जो आदमी मेजर करेगा ना थ्रेड ओडी जी, ये आईडी और ओडी दोनों में उनको ये एक बार देखना होगा, और पिच भी जो देखेगा वो पिच करेक्ट पिच देखेगा वो. So once we have to see it in metric and once we have to see it in inches, which is yes, ORFS का देखते समय थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, और जब वो थ्रेड पिच गेज देखेंगे ना, अभी जैसे थ्रेड है, अभी ये थ्रेड है, थ्रेड में पिच करेक्ट रखेगा और उसमें सनलाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना होगा. अगर सनलाइट नहीं, अगर कोई लाइट पास नहीं हो रहा है तो दैट इज द परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट. तो जो भी चेक करेगा ओनली इन द केस ऑफ ओआरएफएस, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओआरएफएस और मेट्रिक फ्लैट शीट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आदमी लोगों को हो सकता है. ओके सर. क्योंकि स्पेशली इन इंडिया और इन मिडिल ईस्ट चाइनीज मशीन्स बहुत ज्यादा है, मतलब लैंड मशीन्स. आई एम टेलिंग नॉट rig machines. I'm telling about your excavators and basically या JCB. जो कंस्ट्रक्शन मशीन्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आइडेंटिफाई करते समय you need to be very careful on that. It has happened to me once before for a JCB machine actually. चलता है वो तो. ये देखो 4 बार मिस्टेक नहीं किया तो भी आदमी सीखेगा नहीं ना. But but someone was there for me to correct, so that's where I learned my lesson. That's it. Okay, so this is even we had indicated it torque value also. Okay. Now this is the
o-ring dimensions for all ORFS fitting, irrespective of the sizes. All o-ring will have a cross section of 1.78 millimeter. कोई भी साइज लो, जैसे ऐसे ही फ्लैंजेस में 3.53 था, वैसे ORFS में it is 1.78 for all sizes. Irrespective of the sizes, all sizes will have a cross section of 1.78 millimeter. NPT, it will be a taper thread. The size is, you can refer SAEJ 476 or SAEJ 514, both the standard. BSPT is also a taper one. Now, how to identify is here. Now, for NPT, see, the pitch will be, the TPA will be 11.5 in many of the cases. For 2 inch, 1.5 inch वगैरह जो है, उसको आपको 11.5 का TPA है. Now, this is a quick fender. Quick fender मतलब क्या है? आपको अगर आपके सामने एक आधा फिटिंग मिल गया आपको, अभी ये देखिए, जिसका थ्रेड ओडी है 16.66, नट का आईडी है 15.10, 19 TPA, 30 डिग्री कोण, 38 BSP. ये मैं अपने जो भी पार्टिसिपेंट है इनको मैं सब अपने अपने मेल आईडी नीतीश जी को भेज दीजिएगा. ये पर्टिकुलर PDF जो है मैं सबको, ये रिलेवेंट ये जो है मैं सबको देने वाला हूँ. ठीक है, ताकि आप लोग कहीं फील्ड में कहीं फंसे ना. Sir, can you go back to the NPT and BSP comparison, please, once? Yes, here it is. Okay, so usually whenever I sourced some fittings from India, okay, so the guy told me that NPT or BSP में ज़्यादा फर्क नहीं है, so you can just put it anyhow. नहीं ना, BSP So, में but ये देखो, अभी जैसे 3 इंच BSP है. No, up to a certain size, still up to a half inch or 1 inch. See, हाफ इंच ने 3/4 इंच तक ज्यादा फर्क नहीं आएगा. 3/4 इंच में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. देखो 3/4 इंच में ओडी 26.41 है, 14 TPA है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे 1.25 इंच 1.5 इंच में प्रॉब्लम है. Okay. क्योंकि पिच बदल रहा है ना, 11.5 TPA है. So usually जो हम लोग बॉल सप्लाई करते हैं, so इधर most of them आते हैं BSP, but वो लोग NPT बोल के दे देते हैं. It fixes. Later on we face the problem, so that is why I have asked the question. Yes. See, जो NPT जो थ्रेड है, NPT में थ्रेड एकदम से डैमेज करके अंदर बैठ जाता है जी. और NPT थ्रेड रीयूज नहीं हो सकता है. एक बार निकाल दिए तो वो थ्रेड दोनों साइड से डैमेज हो सकता है. उसको सीलेंट भी लगता है, NPT को सीलेंट भी लगता है. Yeah, the Teflon tape you're saying. हाँ, नहीं, सीलेंट, थ्रेड सीलेंट लगता है. थ्रेड सीलेंट, देयर इज अ थ्रेड सीलेंट कम्स फॉर NPT. Or the Loctite one. लॉकटाइट वाला. Okay. तो वो कंपलसरी है. लेकिन ये जो है, लोग उसको तरफ ध्यान नहीं देते. लोग अपना कुछ भी बिठा देते. लोगों का फंक्शन क्या है कि काम चलना चाहिए. Okay. It's all about attitude. That's all. Yeah, because I have been specifying them, saying कि I need NPT, but they give me BSP wall with an NPT. They're saying that it is NPT. That is where I face a lot of issues when we have to fix it to the hoses. So this is a one look chart wherein you can find almost all the thread. You can thread the. अभी उसके बाद अभी आपके पास अगर see when you work in the remote area, आपके पास ये जो होस का एंगल, मतलब जो होस 30 डिग्री बेंड है, 60 डिग्री बेंड है, ये पता नहीं चलता है. अभी ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये आप अपनी पंजा से आप काम चला सकते हैं.
You can just, it is not a correct value, but at least you can, because if you have no tools, at least you have some tool in your palm. How do we determine it through the palm, through the fingers? This is the way. This is Okay, the, if we insert a certain finger, that will show. nothing to insert. You just once you find the hose, Uh-huh. once your hose is with you, Yeah. once the assembly is with you, see, this is the way you can identify it, right? Because ये straight रहेगा. अगर फिटिंग थोड़ा सा हल्का सा बेंड रहेगा तो ये 30 डिग्री है. अगर उससे भी ज्यादा बेंड है तो 45 डिग्री है. And this is 60 degree. Okay. Okay. When you have no tools with you, you are 100% totally handicapped. So you have an instrument that is your palm. I'm not saying that you should use only palm. This is the last instrument if you have nothing with you. So you can take down my email ID and Niteshji's email ID. Both the numbers are also on WhatsApp. Okay. So whatever the requirements of your these things, requirement in the sense, whatever the spec points, selected specs, you can also drop your email IDs for giving all the this complete ये file, ये जो particular अभी का जो file है, that also I can share. So I need your email ID to share all those things, because in WhatsApp it will we have some restriction. Okay, so that is one. Now we will go to some sort of evaluation what we have learned. So I'll request everyone to turn on the camera. So what are the basic doubts we do have? Let us take it into three parts. One is hose, the other is fitting, and the third one is accessories including O-rings. So what are the basic doubts you have? In hoses, let us take hose. Sir, in अभी आपने बोला था कि R9 is discontinued right now. Right. But still we are still in my previous company where I was working, there were hoses that were coming saying R9, but Yeah, people used to supply R12 in place of R9. R9 and some people used to tell that R9 and 4SP, R9 is the replacement for 4SP. Is it proper? No, 4SP is the replacement for R9. 4SP is the replacement for R9. But for that, you don't have to Skype that. If I'm not wrong. No, you see, skiving and non-skiving is purely depend on the fitting geometry, fitting design, and fitting terminology. Yeah, it doesn't. All the hoses are non-skive.
See, when you make the hose, the tube, the reinforcement, and the cover all are have some adhesive properties. There is an adhesion test happens. So all the hoses are made as per non-skive technology. Hoses all are non-skive. Only the fittings you need to decide between skive and non-skive. Okay, and I have one more question. For 4 inches hoses, for bulk transfer hoses, okay, that is tank truck, 40 bar hoses. Sometimes the fittings vary because it is not a standard fitting which we get. Sometimes we get one piece fitting, sometimes we get two piece fittings. Is it recommendable in case if the in case of one piece fitting, 4-inch hoses? I'm saying, giving you an example, 40 bar. There are different thickness in different hoses for outer length. Is it not? I don't think so. It's a standard practice, but is it recommended to skive a little bit of a outer layer so that it fits? Little bit of out skiving means what? Skiving is done to peel off the entire outer cover to till it comes till the wire reinforcement. If the hoses are wire reinforced, then only skiving is required. Otherwise, there It is no need of skiving. Okay, but in case see the fitting, the hose is not entering the fitting. वो तो जुगाड़ है, वो तो जुगाड़ that you are abusing the hose. Okay. Namit ji? Yes, sir. Actually, sir, I want to ask, like, if we are giving, let us say, the customer send us a design pressure. So, is there any construction guideline standard that, like this wire, this braiding we should use, and this is the combination of inner and like any construction design guidelines standards are available for if No, pressure ratings are given? that your rubber technologist, your hose designer only can share those things. I have FCP do have technologies, but we have limited access to that. Thing. So basically, it's like a proprietary things. Yeah, it's all proprietary things because whether it is your hose construction, the wire details, the reinforcement details, everyone do have a protected terminologies, their methods. So, you are constructing the hose, the braiding, what should be the coverage area, whether it is 90%, 85%, 99%, 98%, it's all on their design ideas. No one will simply tell it. So basically, in the standards, they have like classified as class 1 or class 2 based on the pressure ratings, right? Yeah, after designing the hose, you have to disclose what exactly which class it belongs to. Okay. All right, sir. और कुछ और विश्वजीत, प्रहलाद, नितिन जी, आपने हाथ ऊपर किए. हाँ अनूप जी, मेरे 2 सवाल थे. एक पूछिए होस ना. से रिलेटेड था कि क्या हम होस को कॉइल फॉर्म में लीक टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, और करना है तो क्या प्रेशर और क्या टाइमिंग रखना होगा? कौन सा होस है? हमारा लो प्रेशर का वायर ब्रीडेड होस रहता है. हाँ, उसका दोनों एंड प्लग करके वाटर डिप में एयर पास करके चेक कर सकते हैं उसको. तो कितने टाइम के लिए मैक्सिमम कितना टाइमिंग रखना 1 चाहिए? minute is more than enough. 1.5 minute. 1 minute. 1 minute 1 is minute. more Okay. than enough. Okay. Thank you. And second question is, what is the specification of for O-ring? O-ring, there is a standard SAE J515. ACE? J515. Okay. Thank you, sir.
प्रहलाद, सर नहीं है, अभी तो कुछ नहीं डाउट। यश, Anup sir, I have one question. yeah, please. For steam hose, what is the best medium to test apart from water? Steam hose is only water is been used, but the testing parameters is 1:5. 1:5. Yeah, Uh, it is not because 1:2. It is 1:5. because once my end user was requesting me to test it in steam, I'm like, there is no apparatus to test that in steam. That comes in validation test. Once Is the there a factory, एखादा फैक्ट्री जब वो होस्ट बनाते हैं, वैलिडेट करते हैं, तभी वो वैलिडेशन टेस्ट में उन लोग स्टीम में वगैरह टेस्ट करते हैं. okay, and iska jo in case if there is any, is there any standard for steam ISO hose test? ISO 7705. ISO 7705. ये टेस्टिंग करने के लिए कितना प्रेशर तक टेस्टिंग होना चाहिए? लाइक से 1/2 इंच आर1 या R2 पाइप टेस्ट करना है मैक्सिमम तो 2 उसके टाइम्स. 2 टाइम्स ऑफ वर्किंग प्रेशर. यस, मैक्सिमम. ओके. अभी तो उसमें बहुत से बार क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 275 बार होज है, तो टेस्ट होना चाहिए 550 बार में. कभी कभी वो प्रेशर गेज 500 के बाद 600 दिखाता है, तो 500 तक ही करो, 600 तक मत ले जाओ. डोंट एक्सीड टेस्ट प्रेशर. और अपने लोग क्या है, अपने यहाँ पे लोग वो गलत सर्टिफिकेट भी देते हैं. वो उसको 500 बार टेस्ट किया तो 500 बार ही लिखे दे दो उसको. अपने इधर में लोग हैं 1160 बार में टेस्ट किया है. अरे तेरा काटा ही उतना दिखाई नहीं दे रहा है. एक तो 1200 दिख रहा है, नहीं तो 1100 दिख रहा है, तो 1160 कैसे लिख रहा है? सी, ईमानदारी नहीं रहा है. The foremost thing what you should do is you keep a honesty in that. Yes, I have tested 500 बार, क्योंकि मेरा गेज जो है 600 बार जा रहा है, which I cannot test, so I tested it up to 500 बार. If someone asks you, you make a genuine answer to it. वेल टेस्टिंग जो प्रेशर है वो क्रिम्पिंग बराबर हुआ है चेक करने के लिए होता है या पाइप के क्वालिटी के बारे में चेक करने के लिए पाइप की क्वालिटी नहीं ना, पाइप ऑलरेडी इट विल बी टेस्टेड. पाइप, ऐसा कोई भी पाइप नहीं है जो कि टेस्टेड नहीं करता है. हर कोई टेस्ट करके निकालता है. अच्छा. I don't think, because I had visited visited the smallest factory to all the biggest one. All people are testing it, all the loads सब टेस्ट करके बाहर आता है. तो होस्ट टेस्ट करने का सवाल ही नहीं आता है. It is a fitting, it is a crimping, it is a marriage which is being tested. Marriage means hose or fitting a marriage. यश पाटिल, यस सर. कुछ है डाउट? अभी अभी तो नहीं है सर. गौर साहब, जी सर. डाउट रहेगा तो आने दो. अभी मिस्टर तो सेंथिल, बेनियन, अंजू मैडम, नो सर. मिस पूजा,
Innovative team, if you have any doubt, please. So how you find the session?